أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم. Dear students, welcome to today's session, and today we are going to discuss some of the investment tools. Last जो हम लोगों ने कवर किया था वो जो बेसिक मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स थे जिसके अंदर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं उनसे रिलेटेड मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं जिनकी मेच्योरिटी 1 साल से कम होती है उस मार्केट में वो वाले जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स उनको सेल और परचेज किया जाता है, उनको इशू किया जाता है। इसमें आपके ट्रेजरी बिल्स आ जाते हैं, रिपो एग्रीमेंट्स आ जाते हैं, बैंकर एक्सेप्टेंसेस आ जाती हैं, ठीक है। और इसके अलावा भी और जो हैं इंस्ट्रूमेंट्स हैं, कमर्शियल पेपर्स आ जाते हैं। देन वी डिस्कस अबाउट द कैपिटल मार्केट। द फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स आर लॉन्ग टर्म नेचर और उनको आप मोर देन 1 ईयर जो है वो रख सकते हैं। मोर देन 1 ईयर आप उसमें इन्वेस्टमेंट का ऑब्जेक्टिव अपना बना सकते हैं। सो उसके अंदर हमारे पास कॉर्पोरेट बॉन्ड्स आ जाते हैं, टीएफसीज आ जाते हैं, सकूक आ जाते हैं, ठीक है। और गवर्नमेंट बॉन्ड्स, म्यूनिसिपल बॉन्ड्स, ये सारे बॉन्ड्स जो हैं ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में मकसद ये होता है जो डेफिसिट यूनिट्स होते हैं, जो बोरोवर्स होते हैं, वो एक्सपेंशन के लिए जो है मेनली इसमें गवर्नमेंट के इदारे आ जाते हैं, कॉरपोरेशंस आ जाते हैं, ये इंस्ट्रूमेंट्स इशू करते हैं और इंडिविजुअल एंड इंस्टीट्यूशंस हु आर विलिंग टू गिव देम मनी वो इन्वेस्ट करते हैं। एक और सोर्स ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इक्विटी भी होता है जिसके अंदर हम कॉमन स्टॉक किया preferred stock which is in the hybrid security. Common stock represent the ownership in the company and it gives the residual claim on the asset of the company. और इसके अंदर जो है आपके पास वोटिंग राइट भी होता है। यू कैन वोट फॉर द डिसीजंस इन द एनुअल जनरल मीटिंग। Preferred stock, a common type of preferred stock is quasi debt instrument. It is a hybrid security. Here you cannot have the luxury to vote in the annual general meeting, but you can have the luxury to have the fixed dividend every year, the luxury which is not provided to common stockholders. The common stockholders are the real owners, are considered the real owners of the company. So we come towards इन सब चीज़ों को करने के बाद and lastly we discuss about the derivative instruments whose value depends upon the value of an other asset. तो उसके ऊपर भी हमने डिस्कशन की थी, ऑप्शन, फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट, ऑप्शंस, फॉरवर्ड्स के रिलेटेड। Now we come towards the other types of investment tools which are there in the market and we can use them for our investment purposes. First of all, there is mutual fund investment. Mutual funds, investment, life insurance, pension funds, hedge funds, venture capital, and financial conglomerates. These are the other investment tools which we are going to discuss today. So mutual funds, they are specialized in money management. It is very important to know that mutual funds can manage your money. So they are specialized in money management and they are units, combination of various financial assets, and they do not issue shares, they issue units to their investors.
So they receive from the investors, they receive money from the investors with the common objective of pooling the fund. They pool the funds and then invest them in the securities according to the stated set of investment objectives. And investment objectives are set by the investors, whether they are going to have the risky investments or they are going to have the bonds, invest their securities into the mild risky investments, and they can be a very safe investment as well. So the mutual fund is the combination of securities, and these combination of securities represent various risk profiles. So investors provide their risk objectives, and mutual funds pool the fund and invest in various funds, combination of securities according to the investment objectives. There are two types of funds: open-ended mutual funds and closed-ended mutual funds. So in open-ended mutual funds have no predetermined amount of stocks outstanding, and they can buy back. They are open-ended, so when they issue stocks or units to their investors, they can buy back the issue, or they can also issue new shares or new units at any point. So there are open-ended mutual funds. You can buy from these funds and sell your funds, sell your units back to these funds. So price of the share is not determined by demand, but by the estimate of the current market value of the fund net asset per share, which we also called funds net asset value. NAV is the abbreviation of net asset value, and a commission. The price is determined on the basis of net asset value. Okay, so other type is the closed-ended mutual funds. Closed-ended funds are publicly traded investment companies. They are listed on the exchange that have issued specified number of shares, and they don't buy back and can only issue additional shares through a new public issue, but they don't buy back their units. If you want to sell the units, you have to go to the market to sell them to other investors. So these are the closed-ended mutual funds. ठीक है? So there is no uh, uh, they are not like open-ended who has no predetermined amount of stocks. Uh, they are the publicly traded investment. And so if you are interested in mutual funds, in Pakistan there is an institution who's providing the detailed information about the mutual funds, and it's called Mutual Fund Association of Pakistan. We can go to their website, and we can look at various fund listed on that uh, association. So here you can buy fund from various sources, but this is the association which provide all the information regarding the mutual funds. So there are money market funds in our economy. There are equity funds like ABL stock fund, AKD opportunity funds, Alpha GHP stock funds. Uh, you can look at all the funds, how they are performing at Mutual Fund Association of Pakistan. There are equity funds. There are also Islamic money market fund, Islamic pension equity funds. So these are the funds which follow the rules of Islamic Sharia. So you can look at them, and you can look at the decision of the Sharia board as well regarding these Islamic funds as well. So funds, dedicated equity funds, capital predicted funds. So almost there are above 300 various types of fund. Index tracker funds. There are some indexed fund as well. The most closed-end mutual funds are index fund. Uh, Exchange traded fund, we can see ETF. We can say that they are exchange traded funds as well. So you can find them here at Mutual Fund Association of Pakistan.
almost 340, 338 funds which are trading here in Pakistan. You can invest in them, and you can look at the values, how they are improving day by day or how they are declining. It's according to the market and how market is turning out to be, and how market is affecting these funds. So from a mutual fund, there is another investment um tool in the market where you can invest, but if you are going to invest in your future, you can use insurance companies as well. Insurance companies, there is not only a loss of your investment, but loss of your life, or loss of any asset if you have uncertainty about it. If you face any uncertainties, you can go and you can insure yourself. You can insure for better future. There are certain insurance contracts which give you a well enhanced or well what can I say about that, compounded sum at the end of the term. So there are certain tools in investment insurance companies which give you the better consumption opportunities in future. So insurance companies are the business of assuming the risk of the adverse events. Basically, the business is all about this. risk of risk of adverse events. Adverse events, the uncertainties like fire, accident, life, or you can have various, you can insure your various events, like you can have the education insurance as well. If you are unsure that you are going to you're not going to compile a certain amount of money for your children to be to give them a good education, you can have the education insurance. You can have marriage insurance as well. So there are certain tools in insurance companies as well will give you the very uh, distinctive investment opportunities. So there is it covers the risk of adverse events. The insurance companies, in exchange of premiums, the main idea behind is that when they are covering some of your adverse event possibility of your adverse events, they are going to charge you with some sort of premiums as well. So insurance companies are investing when they are accumulating these premiums, when they are piling up with the insurance company, then they are going to decide to invest these accumulated funds, basically the premiums, in securities like treasury bonds, corporate stock bonds, and real estate as well. There are various, they can invest in mutual funds as well. They are investing in everywhere where they can find a good return from those premiums. So there are three types of insurance companies: life insurance, non-life insurance, also known as general insurance companies, or reinsurance insurance companies, that you can reinsure your sum for certain losses. So reinsurance, life insurance, and non-life insurance. Takaful is the insurance, but according to the Sharia law, there are Sharia laws here, and Takaful is a type of insurance, but according to the Shariat here in everywhere, and there are certain Sharia board who signifies these sort of investment. One thing I would like to add here is that the reinsurance is the insurance of insurance, and when the insurance company is come up, it has a risk. Definitely, insurance companies has a risk as well, because sometimes it happens that the claims are piling up and insurance company may not able to pay them back, so they decided to reinsure. This is the insurance of insurance. So reinsures with other insurance company to help them pay the large amount of claims, like in these situations where the crisis like corona pandemic, and we are facing the
biggest crisis in the history. There are many claims which can be arised in sort of from insurance companies. So they adopt the way of reinsuring their claims, and that will help them to stay in a business. Next, we come towards the pension funds. When we talk about investment, there is some sort of compilation of money, first of all. So, pension funds are the companies who compile funds from employees, who accumulate pool of funds. Like these pension funds pool accumulate over a employee working years. They accumulate from the employee give them money from their salary, and what they do, they pay retirement benefits during the employee non-working years. In a non-working year, the employee enjoys the pensions from the uh, in the working years they compile from the employee. In the non-working years, they get the benefits from the company. So what these pension funds do, when they accumulate money, when they जब वो पैसा इकट्ठा करते हैं एम्प्लॉयज़ की ज़िंदगी में, तो उस एक्यूमुलेटेड पैसे को वो इन्वेस्ट करते हैं मुख्तलिफ सिक्योरिटीज़ में। बट देयर इज़ अ लॉ। लॉ क्या कहता है? लॉ मेक्स दीज इंस्टीट्यूशंस liable or obligated that they will not invest in high risk securities, बट दे हैव टू इन्वेस्ट इन दी लो रिस्क सिक्योरिटीज। ये पेंशन फंड्स का एक डायनामिक होता है कि वो जो है लो रिस्क सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, सो इनको हम एक सॉर्ट ऑफ कंजर्वेटिव इन्वेस्टिंग फंड्स भी कह सकते हैं, क्योंकि ये जो है इनको हाई रिस्क सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करने की इजाज़त नहीं होती, क्योंकि दिस इज द मनी ऑफ द एम्प्लॉयज सैलरी। और जो रिक्वायरमेंट ये है कि हर एक को बेनिफिट लाजमी देना है। सो पेंशन फंड्स जो हैं वो लाजमी लो रिस्क सिक्योरिटीज में आपने इन्वेस्ट करने हैं। ठीक है, 2007 का क्राइसिस इस वजह से भी सीवियर था, जो हम जिसको देखते हैं उसके अंदर जो अमेरिका के पेंशन फंड्स थे वो टाइप 1 टाइप ए बॉन्ड्स, जो आपके मूडीज एंड स्टैंडर्ड एंड पुअर लगाते हैं, वहाँ पे टाइप ए बॉन्ड्स की जो वैल्यू है, और टाइप ए बॉन्ड्स मोस्टली बैक्ड बाय होते हैं आपके सिक्योरिटीज, बैड बाय सम काइंड ऑफ प्लेज्ड होते हैं ये। ठीक है, और वो जो सिक्योरिटीज जो प्लेज की हुई थी, वो जो एसेट्स जो प्लेज किए हुए थे, वो थे जी आपके सब प्राइम मॉर्गेजेस जो थे, उसकी वजह से आपका एक लॉस क्रिएट हुआ, क्योंकि ये जब डिफ़ॉल्ट किए, ठीक है, तो ये डिफ़ॉल्ट किए, और जब ये डिफ़ॉल्ट किए, टाइप ए बॉन्ड्स डिफ़ॉल्ट किए। ठीक है, और टाइप ए बॉन्ड्स की भी आगे ट्रॉन्चेस बनाई हुई थी उन्होंने। ठीक है, उनको भी टाइप ए दिया हुआ था, और उन ट्रॉन्चेस के अंदर कुछ टाइप ए बॉन्ड्स होते थे, कुछ जंक बॉन्ड्स होते थे। तो वो जब आपके कोलैटरलाइज्ड डेट सर्टिफिकेट्स जो थे, कोलैटरलाइज्ड डेट ऑब्लिगेशन जिनको कह रहे थे, वो जब डिफ़ॉल्ट किए, तो उसकी वजह से पेंशन फंड्स जो थे लोगों के, वो भी ज़ाया हो गए। तो दिस वाज द वेरी बिग क्राइसिस, और ये एक वर्स्ट सिचुएशन होती है कि लोग अपनी पेंशन्स लॉस्ट कर दें। तो पेंशन भी उन्होंने लॉस हो गई थी, क्योंकि पेंशन फंड्स ने जो पेरेंटली नज़र आ रहे थे टाइप ए सिक्योरिटीज़, वो टाइप ए सिक्योरिटीज़ और ट्रॉन्चेस में उन्होंने इन्वेस्ट किया, और अल्टीमेटली वो टाइप ए ट्रॉन्चेस डिफ़ॉल्ट कर गई, जिनकी वजह से वो पेंशन्स भी
अपनी वैल्यू ख़त्म कर गए और पेंशन्स भी ख़त्म हो गई लोगों की। सो ये एक इस वजह से एक बहुत बड़ा क्राइसिस समझा जाता है कि पेंशन्स तक लोगों की ज़ाया हो चुकी थी उसमें। Then we talk about the hedge funds or lastly we talk about the hedge funds and hedge funds are the riskier investment tools. They are the financial institutions who are specialized in money management, definitely. And what they do, just like mutual funds, they are also specialized in money management. But mutual funds and the characteristics and attributes of hedge funds are way different than the mutual funds. Hedge funds are unregulated private investment partnership. Unregulated, they are not regulated, so there is very less regulations on them, and there are very less restrictions on these partnerships. Limited to the institution, high net worth individuals, और we वो क्या करते हैं, they try to exploit various market opportunities, बहुत ज़्यादा market opportunities को exploit करते हैं and thereby earn larger returns than the ordinary available. तो ये जो है मुख्तलिफ मार्केट्स में आते हैं, उधर इन्वेस्ट करते हैं, वहाँ से बहुत ज़्यादा रिटर्न कमा कर और उस मार्केट से निकल जाते हैं। इट्स लाइक 2007 मार्केट ऑफ पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज। हेज फंड्स आए, मिलियन ट्रिलियन डॉलर्स ऑफ इन्वेस्ट किए, पाकिस्तान की मार्केट जो है वो एकदम उसमें बूस्ट आया और वो बूमिंग एरिया उसने देखा, 60,000 पॉइंट्स तक मार्केट गई और जब वो कमा के निकल गए तो एकदम मार्केट में क्राइसिस भी आ गया और वो मार्केट जो है जिस स्पीड से बढ़ रही थी उससे ज़्यादा उसी स्पीड से मार्केट फिर डाउन भी चली गई। दे व्हाट हेज फंड एंड दिस इज़ अ थ्योरी बेसिकली कि हेज फंड्स भी क्योंकि एक चीज़ को अट्रैक्टिव बना देते हैं, पैसा डालते हैं, डिमांड इंक्रीज करते हैं तो प्राइस इंक्रीज होती है। जब वो पैसा निकाल लेते हैं, जब वो सेल करते हैं, जब सप्लाई इंक्रीज कर देते हैं मार्केट में, तो ऑटोमेटिकली व्हाट हैपेंड इज मार्केट का जोर टूट जाता है और वहां पर मार्केट जो है वो डाउन जाना शुरू हो जाती है और प्राइसेस रिड्यूस होना शुरू हो जाती हैं मार्केट के अंदर। ठीक है, so they require a substantial initial investment for investors and usually have some restrictions to how quickly investor can withdraw their funds. These are the some restriction in hedge funds. Hedge funds take concentrated speculative position. स्पेकुलेटिव पोजीशन मतलब स्पेकुलेटिव ये कि खरीद के बैठ जाना जब प्राइस ऊपर जाएगी और उनके मुताबिक जहां पर प्राइस मैक्सिमम ओवर वैल्यू हो चुका है स्टॉक, उस पॉइंट पे जाकर उसको बेच देना। एंड इट कैन बी वेरी रिस्की, बहुत रिस्की इन्वेस्टमेंट ये करते हैं हेज फंड्स। ये जो है वो इतनी इजी, और इनका मकसद ओनरशिप नहीं होता, इनका मकसद स्पेकुलेशन होता है। ठीक है, इसके अगेंस्ट जो वेंचर कैपिटल हैं, वो वेंचर कैपिटल भी रिस्क लेते हैं, लेकिन वो जो है वो कंपनीज के अंदर ओनरशिप खरीदते हैं मोस्टली, और ज़्यादा उनको जो है वो रिस्क लेकर वहां पर एक किस्म का वेंचर चलाने की कोशिश करते हैं। सो व्हाट दे डू, दे इन्वेस्ट इन हाई रिस्क सिक्योरिटीज एंड डेरिवेटिव्स और वहां से अर्न करते हैं। They use aggressive strategy of investment. They are risk takers basically. तो दे आर prone to risk। जो hedge funds होते हैं वो रिस्क लेते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। तो ये कुछ टाइप्स ही हमारे पास अदर इन्वेस्टमेंट टूल्स की। इसके अगेंस्ट एक ये, चूंकि अगर ये 5% इन्वेस्ट करेंगे या कुछ भी इन्वेस्ट करेंगे, ये जो है ओनरशिप नहीं लेते, जबकि इनके अगेंस्ट जो वेंचर कैपिटलिस्ट होते हैं वो इन्वेस्ट करते हैं किसी न्यू वेंचर में और वो रिस्क लेते हैं। इन टर्म्स ऑफ बिजनेस रिस्क उनका ज़्यादा होता है, इनका इन्वेस्टमेंट रिस्क ज़्यादा होता है, और वो जो है वो ज़्यादा ओनरशिप की तरफ जाते हैं वेंचर कैपिटलिस्ट, जबकि हेज फंड्स जो हैं वो स्पेकुलेटिव एक्टिविटीज़ की तरफ ज़्यादा जाते हैं।
इसके अलावा अगर कोई इंस्टीट्यूशन ये सारी एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर रहा है, वो इंश्योरेंस भी कर रहा है, वो बैंकिंग परफॉर्म भी कर रहा है, वो बॉन्ड्स भी इशू कर रहा है, ठीक है, वो लीजिंग भी कर रहा है, तो उसको हम फाइनेंशियल कॉन्ग्लोमरेट का नाम देंगे, उसको बैंक का नाम नहीं देंगे। हमारे मुल्क में काफ़ी ज़्यादा फाइनेंशियल कॉन्ग्लोमरेट्स हैं। हम उनको बैंक्स नहीं कहते, नाम तो लगा देते हैं, लेकिन वो बैंक्स नहीं है, वो फाइनेंशियल कॉन्ग्लोमरेट्स हैं, बिकॉज वो एक विंडो के अंदर बैठकर मुख्तलिफ एक्टिविटीज़, वो ट्रेजरीज का काम भी कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट बैंक्स का काम भी कर रहे हैं, वो फाइनेंसिंग का काम भी कर रहे हैं, वो लीजिंग का काम भी कर रहे हैं, वो हाउस बिल्डिंग फाइनेंस भी प्रोवाइड कर रहे हैं, वो रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज भी प्रोवाइड कर रहे हैं, वो कार फाइनेंसिंग भी प्रोवाइड कर रहे हैं, उसके अलावा वो इंश्योरेंस भी प्रोवाइड कर रहे हैं, वो इस्लामिक बैंकिंग भी प्रोवाइड कर रहे हैं, कन्वेंशनल बैंकिंग भी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो उनको हम लोग बैंक्स के बजाय फाइनेंशियल कॉन्ग्लोमरेट का नाम दे तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक है, सो ये हमारे पास कुछ इन्वेस्टमेंट टूल्स थे जिनको आज हमने डिस्कस किया। होप यू विल फाइंड मोर इन्फॉर्मेशन। अगर आप किसी भी एक में इंटरेस्टेड हैं, यू कैन फाइंड मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट देम ऑन द इंटरनेट एंड बुक्स एज वेल. You can have more learning from in this specific area, or each and every instrument specified a full subject. And अगर आप hedge funds में interested हैं तो there are whole career in that, mutual fund में there is whole career in that, real estate there is whole career in that. So there are these investment tools which I have given you. Even you can start your own pension fund as well. Pension fund there is whole career in that. So these are the whole subjects. और ये जो investment alternatives हैं मुख्तलिफ, ये आपको मुख्तलिफ opportunities बताते हैं कि as an individual how you can exploit various markets, how you can exploit various instruments, and how you can maximize your profits legitimately in the market. ठीक है, so that is all about today's lecture. So thank you very much, and we will meet again in uh, next lecture in investment portfolio management. Thank you very much. Fi Aman Allah.